जिला जी, मैं आपका चिराग पोशी से इस्तकबाल करती हूँ। आप लोग सबके लिए बहुत बहुत रिपब्लिक डे की मुबारकबादी है। और ये चिराग पोशी आप सब के तरफ से मालिक की दया से, ओहो चिराग, ये चिराग हमेशा हो जाता है वैसे ही। ये जनाब, this is the lighting of the lamp for your Baithak, all of you, LSR alumni, and Republic Day celebrations, and for many, many beautiful mazedar successes for आप लोग की सीरीज। और ये आप लोग की ये वो है, और ये जलता रहेगा अब यहीं। तहे दिल से शुक्रिया। It's like the genie lamp. Lovely. For all your wishes to come true. Thank you. Bulbul, over to you. Thank you, Smita, and thank you, Zila ji. That was lovely to have you here, needless to say. I'd like to join Smita in welcoming all of you to the ELSA Baithak, first ELSA Baithak. Music has great powers. It makes you cry while you smile. It can heal your soul while freshening old wounds. It's magical in its magnificence. This is our small attempt to revive and foster a musically rich tradition, rich and creative traditional culture of the Baithak. अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैं कदे में आ, जामे फनाओ बेखुदी, अब तो पिया जो हो सो हो. Move from the realm of the mind into the realm of the heart. Sufiana Kalam, the oneness of the race, oneness of love, the tenderness of the heart and the tears in the eyes. It's a very cathartic experience. In this very judgmental society, we need a space and time when things are not judged. The ghazal of the Sufi is the poem of surrender. Sufi poets have expressed the warp and the weft of the Sufi of love and beauty and addressing themselves to the creator. Ghazal means talking to the beloved. For the Sufi, the beloved is the creator, and this creative vocabulary ranges from bewilderment to total surrender. The Sufiana Kalam cleanses one, even flowing freely with the spirit of ecstasy, connection with the divinity, the coming together of the people of different faiths, colors, different creeds under the same sky, the same heartbeat. We've just had the National Girl Child Day, and Zila Khan, our artist of the evening, is an epitome of empowerment. Indeed, stereotypes, indeed breaking stereotypes. Daughter of Ustad Vilayat Khan, she's the first generation girl child in the Guru Shishya tradition of the Imdad Khani Gharana, breaking further stereotypes and a milestone towards more empowerment of the girl woman. Zila is accorded the prefix, a professional title of UstadMa, and the Indian classical music and dance lady performers have been conferred much like the Pandit or Ustad that the male counterparts naturally have. I hand over the mics to the young ELSAs, both Kathak dance exponents, to take us through the evening. And here's to Zila. Zila Ma, UstadMa Zila. Tanushree. Thank you so much, ma'am. Namaskar. आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर हमारी जो मेहमान है, उनका नाम जी हाँ उस्तादमा जिला खान है। जिला जी अजीम तर उस्ताद विलायत खान की संतान हैं। इनके वालिद विलायत खान का किसे अंदाजो एहतराम नहीं और जिला जी के अपने सूफियाना अंदाज का किसे एहसास नहीं। मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ कि आए और हमारी बैठक का आगाज करें। Zila ji, it's an honor to share this platform with you today. I have been following your incredible journey and I'm very inspired by the contribution you have made to the realm of Indian classical and Sufi music. The boundaries between Indian classical and Sufi music are ambivalent and they lie at the intersection of rigidity and fluidity. So one of the first questions which strikes my mind is that how do you harmonize the divinity of Sufism and the traditionality of the classical? Sukanya, it's
It's a pleasure to talk to all of you. Adab arze to everybody here. Tanushree, adab. And Bulbul adab. सब लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम भी है, बड़ों को और छोटों को प्यार भी है. Well, learning classical music from my father, from my cradle, is no rocket science. It's something that everybody understands. We all do. We all imbibe things from our parents, whatever mostly our parents do. But I've seen that even though we were growing up in this very traditionally Indian classical evolved atmosphere, my father, Ustad Vilayat Khan, would always listen, and he had records and records and records of the greatest Western classical musicians also, Mozart, Schubert, Chopin, Schumann, and also lighter stuff, not just popular stuff, but not just the Beatles and the Michael Jacksons, but Bob Dylan and Joan Baez and Aretha Franklin, and we used to sing those songs ourselves. Then we also used to listen to very great, naturally at home, all the great gharanas and great singers and musicians of every gharana, and we used to have discussions about that. And by and by, we also listened to Qawwali, and we listened to Thumris, and we listened, and he used to tell us the difference between a Thumri and a Kajri. कि कजरी गाओ तो ठुमरी के जैसा ना हो, ठुमरी गाओ तो उसके अंदाज अलग है, गज़ल गाओ तो वो गज़ल के जैसा हो, सूफियाना कलाम है तो सूफियाना के जैसा है. Lots of people here will also later on, when they see on the net, they will also be able to find Ustad Vilayat Khan playing on the sitar. Eri sakhi more khwaja ghar aaye. A Sufiana Kalam by Hazrat. In fact, let me start with this today. Yes? So it's very natural for all of us to grow up this way. I know that we've had a privilege, extremely privileged upbringing. And I'm very, 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 very grateful. 1000 सजदे भी करें तो भी कम हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके ऊपर भी आए हैं, और स्ट्रगल करके सीखा है, और स्ट्रगल करके कहाँ कहाँ कोने कोने में दुनिया में जाके इल्म सीखा है, नॉलेज को पाया है. और हमें घर बैठे बैठे ये मिला. लेकिन क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी नहीं थी कि हम लोग औरतें पहले बाहर गाया नहीं करते थे हमारे घराने में, 7 पुश्त में. लेकिन जब अब्बा ने ये देखा कि उतनी ही इज्जत से औरतों को भी अब बाहर काम में, और ख़ास तौर से अपने आर्ट्स में जैसी इज्जत दी जाती है, या ड्राइव कर सकती हैं औरतें, या ऑफिसेस जाती हैं, या बहुत बड़े बड़े CEOs हैं दुनिया के और ओनर्स हैं, तो उन लोग को भी वैसी ही इज्जत जब मिल रही है जैसे मर्दों को मिलती है, तब उन्होंने मुझे इजाज़त दी. और मुझे तो खैर सिखाना तो उन्होंने इजाज़त के पहले ही शुरू कर दिया था, बचपन से ही. एंड व्हेन ही सॉ दैट पैशन, मैड पैशन इन मी, वो है ही, वो लगता ही है, वो कोई ऐसी नायाब बात नहीं कर रहे, तो नेचुरली उन्होंने फिर बहुत सीरियसली सिखाना शुरू किया. और तालीम 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 14-14 घंटे रोज़ की तालीम देना और हमारा रियाज करना, क्योंकि उस पैशन से. बिकॉज आई वॉजंट वन ऑफ दोज हु हैड टू कैरी द नेम फॉरवर्ड लाइक अ सन. I was the one who was mad about it so much, and I had that musicality, and he recognized it so well with his vision and his blessing, his expansion of mind, his vision, that he chose to then teach me like a son, and sometimes even more so, बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी बहुत अच्छे से. तो मुझे प्रिविलेज तरीके से सिखाया उन्होंने, और अलग अलग चीज़ें उसमें. हम तो फिर इवन नाउ व्हेन आई सिंग सूफियाना कलाम,
जैसे आपने पूछा अभी, उसमें भी हम अपनी बंदिशें, राग रियत की बंदिशें डालते हैं। आप लोगों को आज सुनाते हैं एक दो चीज़ें ऐसी, फिर आगे बढ़ते हैं।